तो हुआ क्या कि I was reading about पोदार पिगमेंट्स एंड प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया, जिसका मैंने थ्रेड बनाया। आपको मैंने थ्रेड में बहुत सारी चीजें डाली, उनकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। इट्स काइंड ऑफ अ commoditized business. Then I posted a snippet. How do you kind of time commoditize cyclical businesses? तो एक चीज तो पता चल गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, राइट? ये चीज तो आप लोगों को अभी तक आइडिया लग गया होगा। लगा कि नहीं लगा किसी को आइडिया? बोलो बोलो बोलो। Any comments on reading? Am I audible? So honestly मैं तो देख नहीं पाई हूँ। मैं अभी स्टार्ट कर रही थी ये टेक्निकल वाली थ्रेड भी और ये वाली भी। टेक्निकल थ्रेड कौन सी आ गई मैम? टेक्निकल की तो थ्रेड ही नहीं गई। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री का थ्रेड है, प्लास्टिक का है, एक बिजनेस एनालिसिस है, प्लास्टिक ब्लेंड्स एंड पोदार पिगमेंट्स। किसी ने देखा? धनंजय जी कुछ बोलते हैं नहीं, मैसेज सारे देख लेते पर आगे बात नहीं करते। अभी मैंने नहीं देखा सर। नहीं देखा सर, उसको नहीं देखा है। मैंने पूरा थ्रेड कंप्लीट करके खत्म कर दिया, आप लोगों ने शुरू ही नहीं किया अभी तक। नहीं प्लास्टिक बैंड्स और उधर है ऐसे सरसरी नजर से देखा। यू हैव सेड दैट द कंपनी इज बैड बट दैट इज जस्ट के हाउ द होल थिंग वर्क्स ऐसे करके लिखा है। दिस वन ग्लांस लिया है। You have around 150 messages over here. These are all credit ratings. There is a snippet over here. How do you and what are master backages? Where are they used? देखे एक दो, हाँ? बट अभी थोड़े बहुत वीडियोस जो आपने डाले एक दो वो देख पाई हूँ, बाकी नहीं। मैं अभी रीडिंग नहीं किया हूँ। मेरे तरफ से तो वर्क इज ओवर। प्लास्टिक ब्लेंड्स एंड पोदार पिगमेंट्स, द वर्क इज ओवर। Now I was asking what is the importance of reading? उस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? Importance of reading? रीडिंग तो करना ही है ना लोग। हाँ बोलिए सर। नहीं सर आप बोलिए। नहीं मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, मैं सुनूंगा, आप बोलिए फिर मैं नीचे जाके मैं बोलूँ। थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में आइडिया लगता है रीडिंग से, और हम जो पैटर्न्स पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा समझ में आता है। So the importance of reading is I was reading in the plastic industry, and in the plastic industry I was able to get some snippets of the textile industry. तो कभी कभार ये होता है ना कि आपको ये डेटा कहाँ से मिला और आपको ये चीज कहाँ से मिली, वो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द इंडस्ट्री पढ़ने से भी पता चलता है। ये मैं बोलना चाह रहा था आपको, ठीक है? So Podar Pigment Podar Pigment was making master batches for textile industry. So we are getting a snippet of the textile industry. तो once you read businesses, and एक चीज आपने देखा होगा कि I have tried and posted and annotated and read through all 10, 12, 15 years of reports, credit rating reports, and maybe con calls, अगर con calls होती तो जो भी public domain के अंदर data है of both the businesses. Then I posted a comparison snippet of Excel of the numbers कि कोविड के बाद कैसे एक बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ गए, बट ही वाज नॉट एबल टू इंक्रीज हिज सेल्स, and the business of Poddar is very small versus compared to plastic brands. Plastic brands is around 2 lakh tons of capacity. They have got only 18,000 tons of capacity, but still they are doing much higher sales in 18,000 plant versus plastic brands. Margins का क्या फर्क पड़ गया, how plastic brands has lost margins, so on and so forth. Business don't have any moat. It is all dependent on the raw material prices, and how do you kind of time cyclical businesses. बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रक्चरल कंपाउंडर आपको कम सुबह से दिन रात मिल जाएगा, where you can make quick amount of returns and you can have a alpha generation in your portfolio. जैसे आज प्लास्टिक ब्रांड्स के जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल गिरे हुए हैं और उसको कोई देख नहीं रहा है। एंड लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, मैंने वीडियो में डाला है, आप वो वीडियो को देख लो। आई थिंक इट इज सेशन नंबर मैं भूल गया। इट इज सेशन नंबर 83. So it's a small snippet of 5-10 minutes. Watch session number 83. You will get to know how do you time cyclical business. It's important reading into cyclicals. So now, if you understand the importance of reading and we get into cross industries,
I was reading credit rating of Ireda, and Ireda क्या है कि भाग रहा है. So this is the credit rating of Ireda जो मैं आपको post करता हूँ थोड़ी देर में. But why the call? Ireda has basically gone a down move on the credit rating. Earlier it was AAA stable, now it is BB plus stable. Why Brickwork is doing this? Because Brickwork के साथ Ireda is not cooperating, and Ireda is not giving them data. So they are made it a point clear कि we are downgrading the credit rating not because of the business performance, but because the company is not cooperating and not investment grade हो जाएगी after 6 months. इसलिए उनकी रेटिंग गिरा दी है. जब भी कोई रेटिंग गिरती है तो Ireda is a finance business, so they will get finance at a expensive rate. Now this is Ireda, and Ireda में एक चीज थी कि the company government of India conferred the state as a mini Ratn under category 1. So what is a Ratan, mini Navratan, and Navratan state company is a money company which has got tons of money. So see how the numbers have moved. I just wanted to show you these numbers. See how the numbers have moved. Correct. Last year, they had a total loan book of 46,000 crores. They achieved a total loan book of 46,000 crores. In 9 months, they have crossed their total loan book. अभी आपको लगता है ना कि स्टॉक प्राइस रुकता नहीं, वो भागता जा रहा है. 2-3 years back, they had lots of NPAs, gross NPAs. Now look at their NPAs. But to achieve this higher growth rate, now look at the trend of their NPAs. ग्रॉस एनपीए मतलब मोटा मोटा मेरा पैसा डूबने वाला है. नेट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग. नेट एनपीए का मतलब मैंने ग्रॉस में अमाउंट में से मैंने कितना वो कर दिया है प्रोविजनिंग. दिस इज नॉट इन करोर्स, this is in percentages. 8.77%, now it is 4%, which is very high. HDFC Bank has been able to maintain net NPAs below 1% for the last 20 years. So now the net NPAs are 2%. So they are provisioning. जो हम provisioning करते हैं वो हमारे net profit में से डिडक्ट होता है, और इसका एक प्रोविजन अकाउंट बन जाता है जो अगर कोई पैसा डूबेगा तो उस प्रोविजन से ये राइट ऑफ हो जाएगा. और ये प्रोविजन कहाँ बनेगा? आपके नेटवर्क के अंदर. You have to take a hit on the PAT. Last year, full year PAT is 865 crores. 3/4 PAT is 915 crores. And the most important point to look over here is, with the increase in the net worth, the gearing has gone down. So actually the business is become less risky on a higher price. So what is gearing? लोन. 1 रुपए की इक्विटी के सामने कितना रुपए आपने लोन ले रखा है. So here my net tangible equity is what? 2,995 crores. Equity is your share capital and reserves. इसके सामने I have taken around 8.01 times loan. So what is your loan book? Loan book is your net worth plus the bank loans which you have taken. So you combine that, this becomes your loan book. थोड़ा सा पैसा फिर भी बचता है. Suppose you have got around 28,000 crores over here, or 29,000 crores over here. So 27,000 crores you are given out as loans. बाकी का you have some cash or liquidity to do your work in a finance business. This is not a manufacturing business. It's a finance business. The revenue is actually not revenue. This is interest income. What you get on your loans. So you are getting 2,616 crores of interest on 27,000 crores of loans in the year 2021. This has gone to 3,500 crores on 48,000 crores of loans. Okay? The PAT last 3.5 years has more than tripled, or mota tripled. 350 crores to around 920 crores. अभी जब ये quarter एक और पूरा हो जाएगा, this will be more than triple. Now you see the trend of the gearing. Your gearing has from 8 times debt to equity, क्योंकि ये finance business है, is now down to 5 times debt to equity. The main reason for this is your increase in your net worth.
because your debt to equity is being considered by the net worth, right? So looking at the gross non-performing assets, my gross non-performing assets are going up. That means I'm giving riskier loans, and I'm admitting that I'm giving riskier loans, but my business is becoming less risky because of credit, which I have taken from the bank. So Ireda is broadly classified into wind energy. It is booming. Small hydro energy, it is not that booming. Bioenergy booming. Solar energy booming. Energy efficiency and conservation and new energy technology. तो ये booming sector को ये fund दे रहा है. Now, what is the market cap of this company? The market cap of this company today, after the stock is running like mad, क्या है इसका नाम? Ireda. Is around 49,000 crores. So 49,000 crores on a say cumulative PAT of 3 quarters. I will take a cumulative PAT of 4 quarters. I'll just take the TTM numbers. The TTM numbers are give me 1 second. TTM numbers. These 4 quarters, 1, 2, 3, 4. Please add these numbers. If you can add these numbers. Add these numbers, please. So 1120. Ma'am, give me 1 second, please. Okay. What is your total PAT for the last 4 quarters? So 1120 approximately. 1120. So if I take 1120 and I put 1120 over here, so my PAT has gone more than 3x in 3 years. It is compounded more than 25%. In a finance business, you don't have the concept of ROCs, you have the concept of ROEs and ROAs. Correct? So what is your return on assets? My assets over here are, say now 50,000 crores. It will be more than 50,000. It would be definitely more than 50,000. So my asset 1120 divided by 50 or 52, my ROA would be what? 9%? 9.5%? Which is approximately, which is not approximately, which is ideally very good for a finance business. इतना numbers दूसरे business के हाँ 2.2 आएगा सर 1120 डिवाइड बाय 6000 तो 2.2 आता है डिवाइड बाय यार 50,000 52,000 मेरे पास कैलकुलेटर नहीं मैं तो एक रैंडम कर रहा हूँ 2.2 which is also very good. Anything beyond 2% is good. Sorry मैंने 9 गलत बोला. Anything beyond 2% is very good. Anything below 1% is bad. If you are not able to earn 1% on your assets, you are a bad company. आप जितने भी बैंक्स देखोगे PSU बैंक्स उन सबका 1% से नीचे है. बहुत ही कम बैंक्स होंगे जिनका 2% से ऊपर होगा और आप जो ये NBFCs देखोगे they will be in the range of 2 to 4. So till how much time they can sustain this? That is number one. And their growth is what? From 346 to 1120 in a matter of 3 years. कैगार निकालो कितना हो गया? And then you go and look at their ROEs. See, ROEs, anything above 15% is exceptionally well in a finance business. अगर 15% के ऊपर आप जा पा रहे हो, this is not good. This is ठीक है, अच्छा है, खराब भी नहीं, but not that great. But anything above 15 is very exceptional. यहाँ पर क्या है? They are growing very fast. They have a good return on equity. 2.2 इनका ROA है. If they are able to control this NPAs, this company still has the potential to give in double from here. How do you value this company? If my profit is say 1200 crores or 1120 crores, so I can give it a multiple of 5 trailing numbers. See, now these multiples are our choice. How do I value this company? So what can I do over here? I can
Sorry. Suppose my PAT is 1200. My PAT is 1200 trail PAT. ठीक है, कितना मल्टीपल देना चाहिए मेरे को और कितना मल्टीपल आज की तारीख में ये कंपनी डिमांड कर रही है? इफ माय 50,000 divided by 1200, what is the multiple this is commanding? कितना हुआ आंसर? सर 42। ये क्या चीज हुई? दिस इज PE, करेक्ट? डू वी वैल्यू these companies on PE और डू वी वैल्यू these companies on, ये PE हो गया ना, मैंने मार्केट कैप को प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया, ये मेरा PE हो गया 42 का। अभी 56 आ रहा है क्योंकि पैट बढ़ जाएगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ जाके मेरा बुक वैल्यू कितना होता है? कैन यू कंप्यूट द बुक वैल्यू ओवर हियर ऑन योर ओन? हमारे पास डेटा नहीं है, सितंबर का डेटा नहीं है। मार्च 24 का बुक वैल्यू कितना होगा? दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स व्हाट इज माय बुक वैल्यू ओवर हियर। दिस इज माय बुक वैल्यू। 6,000 करोड़ है, वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। 6,000 करोड़ है आज, ये है 2023 का। 2024 में कितना होगा? तो 1200 ऐड कर देंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 800 ऐड कर लो तो अप्रोक्सीमेट वैसे होगा। अप्रोक्सीमेटली 1200 ऐड कर लो, 1200 ऐड कर लो। यहाँ कितना है? कहाँ पे? 2023 में 2022 में? 23 में 6,000 है तो 7200 हो गया ना। थोड़ी सी आप मिस्टेक कर गया। IPO कब आया था? मैंने पता सर अभी आया था रिसेंटली मेरे ख्याल से। IPO अगर आया होगा तो IPO में इन्होंने शेयर इशू किए होंगे तो ये काउंट बड़ा होगा। शेयर इशू किए होंगे तो प्रीमियम पे किए होंगे तो ये काउंट भी बड़ा होगा, जिसका डेटा हमारे पास यहाँ आना चाहिए जो अभी आ नहीं रहा है। उस एडिटेड डेटा के अंदर देन यू गो एंड ऐड 1200 ना। एंड 1200 व्हाई यू विल ऐड 1200? बिकॉज अगर IPO बाद में आया है एंड मान लो ये एक क्वार्टर निकल गया है, Q1 का IPO आया है, तो IPO के अंदर जो बुक वैल्यू दिया होगा उसके अंदर ये Q1 का डेटा नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बुक वैल्यू में जा चुका है। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि कौन डिलीजेंटली बिजनेस को फॉलो करता है और कौन प्राइस के पीछे भागता है। करेक्ट? IPO के टाइम में इसकी बुक वैल्यू थी 8,600। सपोज इवन इफ आई ऐड 285 एंड आई ऐड 338, देन मान लो यहाँ पर 360 आ गया, मोटा मोटा मान लो, 8,600 यहाँ है। सो व्हाट बिकम्स योर टेंटेटिव बुक वैल्यू? सी दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव नंबर, 336 and 360. What becomes your book value? Please add up. Almost 9,500 के करीब। 9,500 कितना? मतलब 9,400 कुछ आएगा बट 9,500 पकड़, 9,500 पकड़ लो। हम 360 we just estimating 9,500 कर लो। Now 9,500, what is your market cap? 50,000 or 49,000 whatsoever. What price to book multiple you are trading at? 19 का about 5.5 sir. about 5 about 5.5. Now my question to ask you is, this company has, what are the metrics I can compare this business? Chalo wo sunrise industry, how can I compare? I can compare on ROEs because this is a ratio. I can compare on ROAs. Your ROA is somewhere around 2.2. Let's go and compare it with the best. Which company was the best finance company in country till date? बोलो नाम बोलो। बजाज है। यस बैंक बेस्ट है। कौन बोला ये बेस्ट है? हाँ बजाज फाइनेंस। श्योर, सोच के बोलो, तुक्का मत मारो। नहीं, बैंक में से SBI और HDFC और HDFC हो सकता है, बजाज। बैंक भी हो सकता है, फाइनेंस बिजनेस भी हो सकता है।
सो बेस्ट तो आपका HDFC गिना जाता है और ICICI और उधर में ओला सर, ओला बजाज इन्वेस्टमेंट। बजाज आप दोनों ही गलत हो सर। दिस वॉज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया टिल डेट। वाई दिस वॉज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया? ये कंपनी अब बंधन में मर्ज हो चुकी है, इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। दिस वाज मर्ज इन समवेयर अराउंड 2019। कोटक स्क्रीन दिख रहा है, अगर आप देख लो, अगर आप लोग सर इंटरेस्ट हो तो मैं आगे चलूँ, तो मैं छुपन एक करूँ। बार नहीं सर, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिखता है। This is the best company. This was the best company Oh, of good. finance. Yes. Of Yes, finance. it is good. Yes. हाँ जी, good. Forget the Yes. stock price. Sir, वो yes कितनी बार बोलोगे, सुन लिया yes. Forget the stock price. Now, just make a sense of debt to equity. And just take any random year. Let's suppose take 2013. Please calculate the book value. $90 crores. कितना? 490. 490 crores. So my loan to book value is 10 times. Yes, sir. Maybe more than 10 times or 10 times. On a 490 crore base, he's making 146 crores of PAT. And he's giving me dividends also. 30%. What becomes my ROE? 146 divided by 490. %30%. Are these numbers correct? Because this is ROCE. फाइनेंस में ROCE का काम नहीं होता। ROC तो फाइनेंस, वो तो वेबसाइट है ना, finance में वेबसाइट पे तो एल्गो चल रहा है, वेबसाइट पे तो एल्गो चल रहा है, वो तो वेबसाइट है। So only looking numbers and skin and will not help you. चलो next, let's calculate the book value here. 600 crore. Around 600 crores. 600 crores, sir. So my loan to book value is more than 10 times. Yes. On 600 crores, he's making 177 crores. What is the ROE over here? And he's giving me 30% dividends. Almost 30%. तो सेम रेशियो में चला रहे हैं, मतलब इनका यही पैटर्न दिख रहा है कि मतलब जितने की बुक वैल्यू उतने के 10 टाइम्स ये बोरिंग लेते हैं और रिटर्न ऑफ रेशियो 30% आ रहा है। Correct. Now let's look at the price to book value, what this company used to get. 20 times. Let's look at the peaks. 16 times. And the troughs. 10 times. 10 times. 9 times. 9 times. ये 2014 से 2019 पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। Till the time the business was not realized or emphasized, जब तक इसका बेस बड़ा नहीं हो गया, from a 200 crore interest income to 800 crore interest income, जब बेस बड़ा हो जाता है, then you start getting good numbers. See, 200 crores profit, straight away 400 crores profit in a matter of what? 3 years. If I'm doubling in 3 years, I'm compounding at 25% CAGR. Here, he was doubling in 4 years. Here, he doubled in 3 years. तो यहाँ से यहाँ कंपाउंडिंग मेरी ऑब्वियसली फास्ट थी वर्सेस मेरी कंपाउंडिंग यहाँ से यहाँ। और आप इस कंपनी को जाके देखो, जब से ये स्टार्ट किया है, ठीक है, जब से ये स्टार्ट किया है, he was continuously at 30% ROEs, maintained his NPAs, and he was continuously giving dividends. ये ऐसा धंधा था, ऐसा फाइनेंस बिजनेस था जिसने अपनी लाइफ में कभी डाइल्यूट ही नहीं करा। ये ESOPs दिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्प्लिट बोनस करके यहाँ ESOPs दिए। इसने कभी इसको डाइल्यूट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और जितने भी फाइनेंस बिजनेस है, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो आप जो अच्छा कह रहे थे ना, अच्छा ठीक है, फाइनेंस बिजनेस डू डाइल्यूट बिकॉज दे नीड टू पिक अप कैपिटल एट हायर प्राइस, उनने सब ने डाइल्यूट किया और हर साल डाइल्यूट किया। So the point is,
in the last so many years, you could have bought this business anywhere and still would have made money. 2008 में मार्केट गिरा था, सॉरी 2008 में मार्केट गिरा था, ये 2008 का पीक था 11 जैन, स्टॉक प्राइस was 10 rupees, 300 bagger in how much time? 11-12 years. Come back to Ireda. What do the numbers tell you? Is he giving you any dividends? No. So you are foregoing the dividends to see higher growth rates. Will he be able to grow at these astronomical high growth rates of 900 crores or 2000 crores of profit? जब तक रिन्यूएबल का बस चल रहा है, रिन्यूएबल, तब तक इरडा डांस कर रहा है. Will he be able to get growing in these high numbers? That is doubtful. Is he paying you dividends? No. Is his NPS very much in control? नहीं, NPS भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं. ठीक है. So now let's go and compare with Bajaj. किसी ने बजाज ही बोला था ना, बजाज फाइनेंस. बाकी सब चीजें all things same. Bajaj, the best company in the country, is still working. Is see the fluctuations. See the fluctuations. Max 13 times book value, 6 times book value, 13 times book value, 5 times book value. This was COVID, I think. हाँ, COVID सही है. 12-13 times book value, 7 times book value. Now it's at the lower end of the range. So we are oscillating between 6-7 to 12-13 times book value. What is the ROEs Bajaj has? It was much better. It came down in COVID. Now it is again much better. Does Ireda have this kind of an ROE? 20%, 22%. Definitely ये ग्रुप के हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा. Let's try and reverse engineer. हमारी 9,500 करोड़ की यहाँ बुक हो जाती है, लोन बुक हो जाती है या बुक वैल्यू हो जाती है. बुक 9,500 के ऊपर अगर मुझे 20% कमाना हो तो मुझे कितना पैट चाहिए? कितना पैट चाहिए 9,500 का 20%? 1800. 1800. अभी कितना पैट है? 1200 एस्टिमेट किया अभी. 11-1200. 1800 पैट पकड़ने के लिए उसको अपनी लोन बुक 1.5 करनी पड़ेगी. अभी भी जो लिया हुआ है, अभी भी लोन बुक बढ़ा सकते हैं. थोड़ा स्पेस है, आपने कहा ना. स्पेस तो बहुत है. लोन बुक बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो डाइल्यूट करके बढ़ाएगा या रिटेन प्रॉफिट से बढ़ाएगा. दैट इज व्हाई ही इज नॉट गिविंग यू एनी डिविडेंड, बिकॉज़ ही इज पुटिंग द मनी बैक टू यूज. And he says, I'm compounding at 15%, which is very good, not bad. Can he get to 20%? If he can get to 20% or 18% or 22%, then we can very well estimate that this price to book can be anywhere between 6 to 12. 8 भी पकड़ लो and 1200 करता है, मान लो 18-20% का ROE हो जाता है, तो 1200 इंटू 8 कितना हो गया? सॉरी, वो तो पी हो गया. 9,500 इंटू 8 कितना हो गया? या 9 कितना हो गया? Almost 85-90,000. यहाँ से डबल. ना जस्ट इमेजिन 8,600 इसका बुक वैल्यू था. इसका आईपीओ क्या प्राइस पे आया था? 32 rupees. Yes, sir. So at 182 rupees, if my market cap is 48,800 crores, so at 32 rupees, what becomes my market cap? Can you compute with your calculator? Almost 8,000. Almost 8,000 crore. 9,000 crores. Okay. The price to book for this IPO was 1.1 time. Something over here, something in between this. ठीक है? You are getting the PE at 10, not even 10, 9 PE.
तो उस टाइम ये एनालिसिस करना अच्छा था या नहीं था, जो हम आज बात कर रहे हैं। और आईपीओ आने से पहले तो नंबर अच्छे हो ही जाते हैं, तो सबको पता है। 8% का मेरा एनपीए 3% रह गया, वो तो बट ऑब्वियस है। गियरिंग भी लो हो गई, 8 टाइम्स गियरिंग का 6 टाइम्स गियरिंग हो गया। And it is a mini Ratan government company. Who is the owner? Who is the promoter? Promoter is Government of India, President of India, 75%. डूबने तो नहीं देगा। Now, if I double the market cap to 16,000 crores, I get to a price to book value of 2. मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे मिला 0, एक भी नहीं मिला। एट डबल द प्राइस, आपको याद है इरिडा लिस्ट होते ही बहुत ज्यादा भाग गया था, किसी को याद है? चार्ट यस सर, बहुत ज्यादा भाग गया था ना। यस सर। I was lucky enough to buy it around 58 bucks. मेरे को 58 bucks पे जाके मिला। Still holding on. अगर मैं चार्ट देखा होता तो मेरे को मिल गया एट द प्राइस टू बुक ट्रेलिंग बुक वैल्यू ऑफ 2, अप्रोक्सीमेटली 8700 करोड़ ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, एनपीएस हैं, थोड़ा सा उसको इसके नेटवर्थ पे लॉस है, अगर नेटवर्थ राइट ऑफ करनी पड़ेगी अगर एनपीएस डूब जाते हैं। बट विल द गवर्नमेंट लेट द कंपनी गो इनटू द डस्ट? नाउ इट्स टेंटेटिव एट द बुक प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 5। सो फ्रॉम 58 अभी क्या प्राइस हो गया? 180। मोटा मोटा 3-3.5x हो गए, मोटा मोटा। हुआ कि नहीं, पूछ रहा हूँ। यस सर। और ये अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने चल रही है और हम तो बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना। हालांकि क्वांटिटी ज्यादा नहीं है मेरे पास, विजय जी को पता है कितनी क्वांटिटी है। विजय सर, यस सर। क्या बात है, यस सर के आगे कोई बोलता ही नहीं कुछ। अब क्या कहें, आपकी क्वांटिटी तो सब मिला के भी सबकी क्वांटिटी कम है। अब ये कहें, ये मुझे क्यों समझ में आया, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि आई हैड स्टडीड द बिजनेस ऑफ एसडी फिनसर्व एक्सटेंसिवली। सो द पॉइंट, द लर्निंग ओवर हियर इज फॉरगेट द क्वांटिटीज, names will change but the logic will remain the same. So first thing, it was held by President of India. Second thing, it's a mini Navratna state company, has around 10,000 crores of cash, or maybe more than 10,000 crores of net worth. It is into finance business of a sunrise sector, which is renewables. NPAs हैं, और ये किसको फंड करेगा? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को। तो इसका मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो बैंक से लोन उठाते थे, गवर्नमेंट ने अपने बीच में एक लाके बच्चा बिठा दिया, ताकि वो सारी लोन की एंट्रीज हैं एक बच्चे के थ्रू रूट होंगी और इसका भी मार्केट कैप बढ़ने लगेगा। जब गवर्नमेंट ही खुद ही खेल में आ गई है मार्केट कैप के, तो मार्केट क्यों ना बढ़े? Now the government is playing. That is why the PSUs, you see the PSUs have been escalating. पिछले 6 महीने में, 8 साल भर में कितने सारे PSUs पागल हो चुके हैं। मोदी जी ने कहा था ना, जिस सरकारी कंपनी को तुम गाली देते हो उस पर पैसा लगा दो। दिस इज जस्ट अ बेबी इन द वैल्यू चेन। इसकी जरूरत भी क्या थी? ये जरूरत भी नहीं थी। इसकी जरूरत भी क्या थी? इसकी जरूरत नहीं थी, लाके खड़ा कर दिया। Because government is making 100 gigawatts of projects. If 100 gigawatts of projects, they need tons and tons and tons of money. Where it is getting the money from? From the banks at a lower interest rate. बीच का मार्जिन गवर्नमेंट खा रही है। सर अभी तो नवरत्न स्टेटस मिल गया ना इसको? मिल गया ना, वो तो आईपीओ आने से पहले ही मिल गया था। तो मेरे पास तो उस टाइम थोड़े से ही फंड्स थे, तो मैंने तो ले लिया।
अब अब मेरे को उसको बेच देना चाहिए कि रखना चाहिए? महंगा हो गया ना, 5 टाइम्स बुक वैल्यू हो गया, क्या करना चाहिए? अभी रखना चाहिए सर। क्यों भाई, रीजन भी बता दो। सर इसका अपॉर्चुनिटी ऐसा है साइज सर, बड़ी है ना सर। तो अभी जो सोलर रूफटॉप सोलर का भी अभी मैनेजमेंट जो 1 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी साइज बताया था सर। अच्छी बात है, तो रखना चाहिए कि बेचना चाहिए? मैं तो रखना चाहिए सर। क्यों, अपॉर्चुनिटी साइज सुन के रखना चाहिए? मेरे को तो कोई इसमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा, रीजन तो सर बताओ। इनको ग्रो करने के लिए जगह है सर। ग्रो करने के लिए जगह तो रखना चाहिए। यस सर। वैल्यूशन महंगा हो गया ना। सर वैल्यूएशन अभी ना महंगा हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग में देखेंगे तो अभी भी ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे कितना देखोगे? फॉरवर्ड लुकिंग में लगे 15% से भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि मैं इसके आर ही पकड़ रहा हूँ। तो 9,500 करोड़ की बुक है, 15% और जोड़ लो तो अगले साल में कितनी किताब हो जाएगी? 12,000, 10, 11,000, 12,000। तो भी तो 3.5 4 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड है जो ना टोटल चाहिए? हाँ? मार्केट जो तो टोटल कैपेसिटी ये बात नहीं आ रही मेरे को। क्या करना चाहिए? ओल्ड सर, वाई? एड्रेसेबल मार्केट सर उसका बहुत बड़ा है आगे। अच्छी बात है, बट वाई शुड आई होल्ड? आई एम एट अ प्रॉफिट ऑफ 350%. Make wealth, not returns, like you say. Sir, what will I have a small quantity of just 1 lakh shares. 1 lakh share is not a small quantity, sir, for us It's at a small 50. quantity. I invested just 5.5 6 million bucks in this. Bolo, what to do? Yeah, sincerely I have 1 lakh shares. if you find that in 3 years and normalizing everything, it won't be increasing. So you It won't be might. what? It won't be what? So if you have any other better opportunity and you are finding it that it's difficult for rising it further, Sir, markets are overvalued, markets are heated, valuations are high. वो सब चीजें तो मैं ही आपको बोल रहा हूँ. so Markets exit. are markets are overrated. So what should I do? Should I hold or should I sell? I'm asking a genuine question. आप लोगों का क्या व्यू है? सर अगर आपके इतने अगर आप सब क्लोज बताए ऐसा खुद ही कह रहे हैं आप सब कुछ आपके जो स्टेटमेंट है उनको देखते हो तो यू कैन सेल एज वेल ओके, बिकॉज मतलब आपने कहा मार्केट ओवरवैल्यूड है और इसका फॉरवर्ड लुकिंग भी फर्दर मार्केट वैल्यूएशन अगर इंक्रीज। ओवर वैल्यूड है और अगर मैं इसको टाइम करूं तो फिर मेरे में और चार्ट वाले में क्या फर्क रह गया सर? नहीं सर आप तो वैल्यूएशन के उस पे कर रहे हैं ना कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है अगर कंपैरेटिवली। अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, हो सकता है ये, हो सकता है ना हो, भविष्य में क्या होगा मुझे थोड़ी पता है। आई एम नॉट इनटू द प्रिडिक्शन गेम कि इट विल बी नहीं सर वैल्यूड एट 5 टाइम्स बुक और 6 टाइम्स बुक और 10 टाइम्स बुक, आई डोंट नो। तो वैल्यूएशन तो आपने जो किया उसके अकॉर्डिंग तो आपका एक पॉलिसी होगा ना ऑब्वियसली कि हाई है, सिर्फ वैल्यूएशन जो मैंने किया ऑब्वियसली हाई है, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपकी वैल्यूएशन की एक पॉलिसी होगी कि इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे एग्जिट करना आपका नहीं प्लान। सर, then this is the learning which I wanted to implant in everybody's minds. You should not be getting into the prediction game. No, it's not a prediction game, sir. It's your valuation. You are only as you set the rules. What Mm. In the stock markets, the rules don't work. If you have read your books and you are from a educated background, you still cannot make good money. Rules don't work over here. That is the beauty of stock market. okay, sir. If the valuation is high, agreed. Now two questions. Can the valuation stay high for exaggerated period of time? I don't have an answer to that. Only sir can Can happen the because there is fundamentals probably catch up with the valuation? They could. The business will increase maybe for the next 2 3 years. Can this company be more than a 1 lakh crore market cap? Yes. Am I buying it today? No. Am I wanting to sell the previous holdings? Of course not. You have the Why? margin of safety, sir. It's not about margin of safety because I would not get any other opportunity at these valuations. So valuation high low is not an oscillator like RSI going to 60 and RSI going to 20. ऐसा नहीं होता यहाँ पर.
So one thing is very good जो आपने बोला, it is got a large opportunity size because government is putting 100 gigawatts of solar projects by 2030. तो अभी तो कुल इंडिया में 60-70 गीगावाट चल रहा है. 50 gigawatt they say we want to expand every year. We're not being So, sir, Oscar? if I rephrase, you are saying even after high valuation discomfort, you are not selling. Not selling, sir, because I will not get back a maybe price to book of 1 or 2, maybe 1.5, and that too trailing. Considering that there is no other opportunity to invest, if you find any other opportunity, there is still an opportunity to invest, but I see a large length of the runway over here, so I'm holding on to it. अभी वो सर्किट जा रहा है, कल को लोअर सर्किट पर लगेगा तो क्या फर्क पड़ना है? This is just a learn. This is just a learn. When to sell? If the business is right, the time to sell is never. ये बात हर किसी को समझ नहीं आती है. This is correct, sir. So you are saying according to business performance, you will decide to sell or not sell. Of course, that is the point. So valuation. If the business is right, and you have a long-term horizon, a long-term I mean 7 years, 10 years, anything more than 5 to 7 years, valuations at a point will not matter. Why? Because you have a long-term horizon. If you have a 1 to 2 to 3 year horizon, valuations will matter. If you have a 3 months horizon, nothing matters. Only your charts matter. So understand your mindset and which mindset you want to approach the market. If you are a trader, nothing matters. Your charts matter. Your momentum matters. If you are a 1 to 3 year investor, which 90% of the people on Twitter who are teaching, valuations matter. But if you are like entrepreneurs, like the promoters, maybe from 5 to 7 years or maybe more than that, valuations will not matter that much, because a business over the long term will earn, you will make money what the business makes money, which is the return ratios. आप महंगा भी ले लोगे, आप ज्यादा सस्ता भी ले लोगे, 20 साल में या 30 साल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. If the ROCs are 15%, in the next 20 years, you can be आधा 1% आगे पीछे. I may ask, जैसे according to same argument, Nestle, this is a personal question. So say I want to buy for my daughter, and Nestle and these very good company special names have very high valuation. So if in 15-20 years they continue the same performance, the valuation won't matter. Correct. See, if they are compounding at what is the rate today? The multiples are very high. Of course, the multiples will contract. What will happen? For the next 5-6 years, you will not make any money. See, people who bought Infosys in 2000 at the peak of the .com bubble for 6 years made zero returns. और आप मोतीलाल ओसवाल का वेल्थ क्रिएशन स्टडी जाके देखोगे, for 6 years you will be saying zero returns, and you see Dr. Ramdev Agarwal talking on Motilal office and so many public appearances. Infosys from 2000 to 2006 had zero returns. 6 साल किसको सबर है? यहाँ 6 घंटे का सबर नहीं है, ठीक है? But what happened after 2006? And I'm talking about 20-30 years. What happened after 2006? आपको देखना है? I can show you the performance. This is the performance of Infosys. Till 2006, मतलब ये पुराना डेटा तो नहीं है. From 2000 to 2006, they had zero returns. वही 200-300 का स्टॉक प्राइस है. Maybe around 2010 also you went up to $400. Provided the growth rate was there, provided the length of the runway was there, is the growth rate still there? Are we going at those astronomical rates? Today the answer is no, because the company has become a monster now. It's become a monster. So the multiples will contract. But if you move outside India, still look at Meta, Google, Facebook, and all these companies. They are mega monsters and they are still growing.
ऐसा नहीं है कि कंपनी का ग्रोथ ही खत्म हो गया और ग्रोथ एंड गुड ग्रोथ और मैं इसको वैल्यूएशन को लेके बैठा रहा हूँ और मेरा पैसा नहीं बन रहा, ऐसा थोड़ी है। मेंटेनेंस रिसर्च तो करना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज आवर टाइम होराइजन, वो हमको हमारे को खुद को पूछना है, अपने आप को। बोलिए जयदीप जी। Say time horizon is 15 years, not small. If your time horizon is 15 years, don't go gung go in one go. Do it like a SIP, ना। आपको 5 कंपनीज लेना है फॉर 15 years फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। मंथली इनकम जो आपको आते जाए धीरे धीरे उसको टॉप अप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। So I also have a similar approach. What companies I want to keep for long term, I also trade, I also do momentum, वो सब चीजें हैं। तो जो भी surplus I am able to get, एक put the investment in those companies and forget about them। स्टॉक प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, मेंटेनेंस रिसर्च है, जब तक कोई रेड फ्लैग नहीं है, जब तक यू आर देयर। जैसे आपको कोई रेड फ्लैग दिखता है विच यू आर आउटसाइड योर थीसिस, यू मूव आउट। You don't get structural compounders every day. So if you ask me, you are selling Ireda? No. It might go lower circuit tomorrow or day after tomorrow. I don't know. So same will be my question. The structural compounder of today, if you doing a study, 95 or say 2000 in Indian market, none of the name was known, which are now we are calling structural compounder, other than Asian Paints and Obviously, अगर नेम्स नोन होते हैं तो वो तभी इतने महंगे हो जाते हैं ना कि आपको 2-3 साल 4 साल कोई रिटर्न आता नहीं ना। So how the hell going back in 1995 or maybe 2000, if you were there in that era or that period, how the hell you would have known? The one very good simple answer to this is long opportunity, big opportunity size. The vision to see. Rakesh Jhunjhunwala said, I wouldn't have bought Titan if I could not have envisaged that the organized retail jewelry market from 5% organized will move to 15% organized. And his biggest portfolio wealth creator was Titan. He was not looking at numbers, कितना sales growth है, कितना profit है, कितना margin है। मैंने I think वो video भी आपको share किया हुआ है, where in public appearance in maybe I think in 2001 or 2000, maybe 2006 that was. Don't try to emphasize too much on the profits. Try to know the factors which will create those profits. तो जितने भी ये एक्सेल मॉडलिंग होती है कि इतने परसेंट से मेरी सेल बढ़ जाएगी, इतने परसेंट से मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा, मेरा पैट बढ़ जाएगा और इतना मैं उसको मल्टीपल दे दूंगा, ये सब बकवास है। जितना मेरा डीसीएफ होता है कि इतना मेरा ग्रोथ रेट रहेगा, जितना आपको बड़े बड़े विद्वान सिखा रहे हैं, वो सब बकवास है। We cannot bloody time it, we cannot predict it. I am not predicting कि 3 times book मिलेगा या 5 times book मिलेगा या 10 times book मिलेगा। I'm just comparing it. When you compare, it is called relative valuation. When you do DCF, it is called intrinsic valuation. When you don't have cash flow, you do relative valuation. I'm not comparing it. Sorry, I'm not doing DCF over here or a reverse DCF over here. मैं तो एक opportunity size देख रहा हूँ। My opportunity size is large and government projects. So जितने भी government का काम आएगा, this company will fund. Correct? Why SD FinServ? APL का पूरा नेटवर्क है, APL के नेटवर्क के साथ कितने सारे और जुड़ते जा रहे हैं। So I'm just trying to value the business on APL's network. अभी कितने सारे एंकर्स उसके साथ और जुड़ते जा रहे हैं, वो तो मेरे आइडिया मतलब वो तो मेरे वैल्यूएशन मॉडल में आ ही नहीं रहा है। Opportunity size is large. And to complement that, stock price is going down, which is good. No advice to buy or sell, please. मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। So can you see the opportunities? Can you see the opportunity size going ahead? What is the opportunity size? हाँ बोलो। See, what is the opportunity size? Feel yourself to be very fortunate because you are living in this era.
there is a large shift happening from internal combustion engine to the electric vehicle engine. और ये 1915 में या 1918 में हुआ था लास्ट. We were not there in 1915 or 1918, and probably we would not be there between say 2060 or 70 or 80 what, so I don't know. We are at the cusp of a drastic decadal or a centurial change. You have got large opportunity size in front of you. You just need to analyze that. Same Autonomous opportunity car. size. If I may, let me ask a further question. It's a technical question. So same opportunity sizes for the very big companies like ABB, because they are the actual leaders in the. As I'm working in this industrial sector itself, I see engine. Yes. There is a good opportunity for ABB. And Bangalore में उनके अच्छे सारे काम उनके वो Bangalore started seeing. Yeah, so as I know, because I'm also working on ABB as well. So. Okay. So they have very now I was, because I'm working in that sector, so I was studying their business. So I find their valuation at 110, 115 P multiple, and growth rate is okay, not very high. So how to consider that for the longer term? Say at such a. Sir, then you can structure your buying. You can do the initial buying now and wait for the valuations to make sense to you going ahead. You can structure your buying. There's not written in the book you buy it on day one. Structure your buying. How much ever you want to buy or how much ever you want to allocate over the long run. That's the way to do it. Working with the IC, as you are saying, industrial combustion engine, so मेरा specialization IC में ही है. तो चलो अच्छी बात है. We'll be happy to get your inputs. Yeah, so but the issue is the valuation of electrical companies as Siemens is the one, because Siemens I've been seeing from last 10 years 15 years in my industry. Anywhere the best machines are used. So same for the ABB. Some of the people may not be knowing they are making turbochargers for the very large vessels. Yes, I know, and they have installed turbochargers in Bangalore. I know that. Yes. I've read that news. And they have been doing turbochargers for a very, very long time. So I've been seeing their turbochargers more than 15 years. So, yes. That's a very big thing that ABB is doing, and that will be the need of the hour. Yes, that was the need of hour. So now timing it. So my point was same. The valuation, how to structure this one. Because I know some. Suppose you want to buy 100 shares, sir. Buy 2 shares today. Buy one share today. Suppose you want to buy 100 shares. Structure it over a period of 1 to 2 years. When your holding period is 15, 20 years. Structure it. Let the market get sneezed out. Let the budget throw some surprises. You know what to do. No? Your focus is on one area. You're looking 15 years out, 10 years out. Try to structure it. कल interim budget आएगा. Sitaram ji will give the budget. Some surprise may come, market may crash, or something might happen, or some war might structure it. In COVID lows or in demonetization lows, we had opportunities. People were shit scared. And when you look at opportunities, when there'll be fear, do you find fear anywhere in the market? I don't find fear anywhere in the market. No, sir. Actually, yesterday I had one conversation with my remote cousin, and they are almost illiterates, I must say them. And now they are learning trading. I don't know why. I asked them why. And I was surprised that they know about trading and they were talking about Forex. I consider them illiterates actually, purely, because they are 10th class and they are not doing much anything. So these are indications, na, when everybody who does not know anything goes into trading. These are indications. Na, there is no fear. Until unless there is no fear, you will not get the valuation steep. So hold on to your buying power. Structure a buying. Just buy few tracking quantities so that business or the stock is there in your demat and you have a look at it and you remember, you don't forget it. सर सब जगह पे पागलपंती जैसे हो गया है, सब स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है, पता नहीं जो वैल्यूएशन मिल रही है लोग ले रहे हैं। सबसे बड़ी पागलपंती ये चल रही है अभी मार्केट में कि हर एरा गेरा नथु गेरा फंड रेस कर रहा है। सबसे बड़ी पागलपंती ये चल रही है।
ठीक है सर? यस सर। तो these are indications ना। और सबसे बड़ी पागलपंती की चिट्ठी, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जितने भी ट्विटर हैं, हजारों चार्ट्स आ रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये भेज दो, ऐसा कर लो, ये कॉल, वो पुट, ये वो, हाँ हु। ये सबसे बड़ी पागलपंती है। ये टेक्नो फंडा, ये हो गया, वो ऊपर चला गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ये सबसे बड़ी पागलपंती। This is the time to stay put, study more businesses. If you can't understand the valuations today, structure your mind. If I may say so, if I may ask हाँ personal सर, question. हाँ Sir, I've been staying put from the valuation means when the Sensex was 48,000. उसके okay, बाद से I have not able to invest, and it's been very very long time. But although I have not invested anything after that, okay. so staying put for a very further long time means the same Sir, question. How? sir, I will give you one answer from Sir Peter Lynch. More money has been lost waiting for the markets to correct. Sir, that was my question. Yeah, more More correct. amount of money or more amount of opportunities have been lost for the markets to correct. मैं नहीं बोलता market correct करेगा या क्या होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, I don't know. It can go 5%, 10%, 20%. It cannot go even 1%. I don't know. So the time you think you are getting into the prediction game, you should not do that. Okay. So structure your buying. Once you structure your buying, you will get the confidence to do what you want to do. See, ABB is a good example. Structure your buying, no? Buy 2 shares, no? What does it need to tell anybody? Okay, sir. And feel like a business owner, no? I know something is going to happen and something is going to happen. You'll feel happy with it, no? So once you do that, then once you sleep on your pillow, then see, this guy is going to charge with my charger. I am the owner of this business. Feel that way. ठीक है? So the vision to see. So the vision to see. What is the vision to see? Kids will be, population will be going up. Kids would be coming, so they would be needing school books, pencils, right? They would be needing erasers. They would be needing notebooks. Or will the electronic stuff will fade out? That holograms would be coming for people, for kids to learn. Autonomous cars would be coming. If autonomous cars would be coming, data connectivity would be very high. Cloud computing will explode. So many things to think about. So in reality, investing is everywhere. You can get ideas from anywhere. So be open for it. And if you are fearing, valuations are very high, go slow, structure your buying. ठीक है? I hope that is helpful. Yes, sir. Thank you, sir. चलो, thank you. Any questions? Thank you, sir. Okay, thank सर you. हिमाचल फाइबर्स के लिए पूछना था। थैंक यू सर। हाँ सर, क्या बोल रहे हो? मैं हिमाचल फाइबर के लिए पूछना था कि अभी भी उसमें एक्चुअली सेलिंग चालू ही है। सर, उसका एक रीजन है। जब तक अगर वो रीजन नहीं होगा तो ये स्टॉक जीरो भी हो जाएगा। There is a reason behind it, the merger of Shiva Protex. Until unless that does not come, selling might come, buying might come. I don't know. As a disclosure, I am also invested. If that merger, if the merger goes through, then makes some sense. If the merger does not go through, then we are in a bad spot. If the merger goes through, then we are in a good spot. So by when, like, we will be able to get the clear picture? अब सर वो तो दीप्ति मैम हेल्प कर सकती है। लुधियाना उनका पेरेंटल घर है, 1 तारीख को उनका EGM है। तो नहीं जा पा रही मैं। अब विजय जी, अब मैं क्या करूं? आप चले जाओ। लुधियाना AGM में जाके उनसे क्वेश्चन पूछ लो। अगर वो बोलेंगे राकेश जी को भेज दो,
एजीएम में हम उनके सर सवाल मैंने तो पूछेंगे। जाने का वो किया ही था, बट बी रेस्ट अश्योर्ड नेक्स्ट एजीएम मैंने ये जाने दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट में जो एजीएम भी से नया एजीएम आएगा नेक्स्ट मैं एजीएम पहुंच ही जाऊंगा। नेक्स्ट नहीं एजीएम ये से पहले नहीं, और सर भी कितने कंपनी होंगे ना, नेक्स्ट एजीएम से पहले इसी अगर में स्टॉक तो ही जीरो हो गया तो नहीं। तो आप स्टॉक मार्केट में जब आए हो तो जीरो करके ही, मैंने खूह खाते में आपने जो डालना है वही आप डालते हो ना, उसमें क्या बात मुझे है। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मेरे पास तो रीजन है कि आई हैव बॉट इट फॉर अ रीजन। जब तक वो रीजन है आई एम देयर, अगर वो रीजन नहीं है आई एम नॉट देयर। नहीं इस ये वाला तो मैंने खूह खाते में जितना डाल सकता था कभी उतना ही डाला है। चलो ठीक है, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग शॉर्टली। थैंक यू।